अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपने पहले भी लास्ट ईयर भी कुछ मेरी शायद वीडियोस देखी थी यहाँ पे बैठे हुए। तब अंगूर या तो नहीं थे या खट्टे थे, लेकिन अब अंगूर जो हैं पक चुके हैं और मीठे भी हैं, मैंने खाए भी हैं। तो दैट्स सम गुड न्यूज़ आफ्टर 3 years कि फाइनली वी गॉट टू टेस्ट द फ्रूट एंड इट वाज इंडीड वर्थ द वेट। Talking about useful things, good things, this is a book that you should not read at all. इसका नाम है What If by Randall Munroe. Randall Munroe जो है ये एक XKCD कॉमिक्स है, xkcd.com आई थिंक ये वेबसाइट है उनकी, वहाँ पे ही पोस्ट्स कॉमिक्स और ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं या साइंस बेस्ड इनके कॉमिक्स होते हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी होते थे जो ये लोगों के लिए आंसर किया करते थे, जो उनको वेबसाइट पे क्वेरीज रिसीव होती थी या कहीं भी। तो ही यूज्ड टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। तो फिर ही डिसाइडेड व्हाई नॉट राइट अ बुक बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल साइंटिफिक सिचुएशंस। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं और ये कभी होनी नहीं है, तो इस बुक को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, राइट? एंड लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। दिस बुक हैज़ अबाउट 200 and I think about 300 chapters, और उसके अंदर ये सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं और हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हो जाए तो वो किस तरह से सिनारियो प्ले आउट करेगा उसके बारे में ये डिस्कशन है। सो दैट इज़ व्हाई आई वुड से दिस बुक इज़ वेरी यूजलेस। जैसे हेयर ड्रायर, एक क्वेश्चन आया है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स है, उसके अंदर आप एक हेयर ड्रायर डाल दें तो वो क्या होगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो बॉक्स है उसमें हेयर ड्रायर के जो है वो डिफरेंट वाटेज डालते रहते हैं, डिफरेंट हेयर ड्रायर्स डालते रहते हैं, फिर इवेंचुअली बताते हैं कि जी किस तरह वो हाउ विल थिंग्स वर्क आउट। फिर देयर इज़ वन चैप्टर द लास्ट ह्यूमन लाइट, कि हर इंसान अगर मर जाए, सब के सब मर जाएं, तो आखिरी जो लाइट होगी वो अर्थ से कब बुझेगी। दैट इज़ अनदर वन क्वेश्चन। एंड if every person on earth aimed a laser pointer at the moon at the same time, would it change color? मतलब क्या मून का कलर चेंज होगा अगर हम सारे एक ही टाइम पे एक ही लेज़र पॉइंटर मून की तरफ जो है वो पॉइंट करें। तो एंड a lot of chapters like that. And what would happen if you set off a nuclear bomb in the eye of a hurricane? Would the storm cell be immediately vaporized? So these are all hypothetical situations, and again I really think this is the most fascinating, the most interesting useless book I've read, because at the end of it you don't really get to know a lot of things, but at the same time you learn a lot of things, because वो साइंस के बारे में बात करते हैं लेकिन in such a basic manner, in such a basic way that it intrigues you. Or even if you're a scientific person or a non-scientific person, I mean, even if you're from non-science background, this book I think you will really find interesting. Then there is one chapter, human computer. This was an interesting one. How much computing power could we achieve if the entire world population stopped whatever we are doing right now and started doing calculations? How would it compare to a modern day computer or smartphone? So इसके अंदर भी he talks about how the entire population's brain power would work against a computer, and he gives very funny and witty responses to a lot of these questions. फिर कभी in this book there are also parts जहाँ पे he answers worrying questions. Actually he does not answer them, but he just talks about the kind of worrying questions that he has gotten. So I will read some weird and worrying questions. Would it be possible to get your teeth to such a cold temperature that they could shatter upon drinking a hot cup of coffee? That's one weird and worrying question. How many houses are burned down in the United States every year? What would be the easiest way to increase that number by a significant amount? Say at least 15%. So, these are weird and what if scenarios. There is one more question. I assume when you travel back in time, you end up at the same spot on Earth's surface. At least that's how it worked in the Back to the Future movies. If so, what would it be like if you traveled back in time, starting in New York Square, New York, 1,000 years back, 10,000 years back, 100,000 years back, a million years back, a billion years back? What about forward in time, 1 million years? So this question he also answers,
but I really enjoyed reading this book, and I think you will too. So give it a try. If you want to see more about his work, go to xkcd.com. First, try to look for his comics, Randall Munroe's comics, and if you enjoy the comics, go for this book as well, because I think you'll really like this book. Thank you for watching this review. Allah Hafiz.